ओके जी, अब हम आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि है आप सब के सवालों के जवाब देना। मैंने 2 हफ्ते पहले कुछ सवालात पूछा था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताया कि आप क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ, किस चीज़ के बारे में आपको टिप्स एंड गाइडेंस दूँ। तो मेरे पास वो सवालात एक दफ़ा फिर से स्क्रीनशॉट की जो है ना सूरत में मौजूद हैं। सबसे पहले मो खान ने मुझे लिखा था कि आई एम ए बिगेस्ट फ़ैन फ्रॉम अफगानिस्तान। थैंक यू सो मच मो खान। कैन यू स्पीक अबाउट द MMA सीन इन अफगानिस्तान फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान के फाइटर से लड़ चुका हूँ, अफगानिस्तान में भी अफगानिस्तान के फाइटर से लड़ चुका हूँ, सो आई कैन डेफिनेटली टेल यू अ थिंग और टू अबाउट अफगानिस्तान MMA सीन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे एक बहुत ही अजीज़ स्टूडेंट टीममेट जो है मुबशर खान, who has trained with us for a very long time at Team Fight Fortress. He got promoted to blue belt in Brazilian Jiu-Jitsu under coach Atif Imtiaz Butt, and he went back to Afghanistan and started teaching straight up. जो नॉलेज उन्होंने गेन किया था वो नॉलेज फ़ौरन से जाके जो है उन्होंने अफगानिस्तान में सिखाना शुरू किया, और हमने देखा कि अफगानिस्तान के काफ़ी फ़ाइटर्स में जो ग्रैपलिंग की एक समझबूझ थी, जो उनकी जित्सु थी, वो बहुत ही बेहतर हो गई, एंड दे लेवल्ड अप ऑन देयर ग्रैपलिंग। जहाँ तक MMA फाइटर्स का ताल्लुक है, द फाइटर्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टेरेन, बिकॉज ऑफ द डाइट एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग एंड द लाइफस्टाइल एज वेल, बट यू लैक अ लिटिल बिट इन टेक्निक, which in my opinion was being overcome slowly and gradually. But then again, with the ongoing situation in the country, I'm not sure if you guys are still training, if there's any mixed martial arts going on in Afghanistan or not. But IFT1 was a huge statement for Afghanistani MMA, and it showed that the fighters from Afghanistan are actually progressing, they're doing good, they're staying in shape, and they're actively training, because so many fighters came over to Pakistan from Afghanistan and they competed, they fought really good, they fought great, some wins, some losses, doesn't matter, but as long as they competed, that is what matters. Also, we have a couple of fighters from Afghanistan who are competing, who have competed actually in Dana White Contender Series, and I think one more fighter is going to compete in road to UFC China, so I'm not sure what's going on with that. But then again, that shows that the MMA scene in Afghanistan is doing pretty good. All right, second question was from a brother from Gilgit Baltistan, Shahid Hussain ने मुझे बोला कि talk about how Pakistani fighters can go out of the country to become a good fighter and make good career as an MMA fighter. शाहिद, सबसे पहली बात यह है, मैं पाकिस्तान में ट्रेन किया, मैंने पाकिस्तान में ही ग्रो किया, और पाकिस्तान में ही मैं वो फ़ाइटर बना जो आज लोग कहते हैं कि यार आप अच्छे फ़ाइटर हो। तो पाकिस्तान में रह के आप वो सब कर सकते हो जो आप पाकिस्तान से बाहर आके कर सकते हो। सबसे पहले आप ये करो कि अपना एक ऐसा लेवल बनाओ, ऐसी टीम के साथ खुद को जो है ना सराउंड करो जो कि आपसे बेहतर लेवल पे हो। ऑब्वियसली जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो और आपको लगता है कि अब मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती है, मैं बहुत काफ़ी आगे अपने टीममेट से निकल आया हूँ, या तो आपको लगता है कि आपके टीममेट्स में कोई प्रॉब्लम है कि आप कंसिस्टेंटली उनसे ट्रेन नहीं कर सकते, या कोई भी इशू है, सिर्फ उसी टाइम पे आपको जो है ना टीम चेंज करनी होती है। या थर्ड ऑप्शन जो कि आपका वाइल्ड कार्ड होता है, जो मेरे केस में हुआ था कि मैं सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड आया था, ट्रेनिंग की मैंने अनीता के साथ फेटेक्स में, और उन्होंने मुझे देखा, इन्होंने मुझे साइन कर लिया, एंड ऑब्वियसली बिगर प्लेस, बिगर अपॉर्चुनिटीज़, और व्हेन एवरीथिंग वाज कवर्ड, तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ पाकिस्तान से बाहर निकल के अच्छे फाइटर नहीं बन सकते, आप पाकिस्तान में रह के भी बहुत अच्छे फाइटर बन सकते हैं। उसकी कई एग्जाम्पल्स हैं। इस्माइल जो है ना, मैं हर बात में उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो इस्माइल आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, हैदर सत्ती आपके सामने एक एग्जाम्पल है, और जितने भी जो है ना दूसरे फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान में रह के ट्रेन कर रहे हैं, पाकिस्तान में ही ट्रेन करके फाइट करते हैं, वो आपके सामने एग्जाम्पल हैं। हाँ, अगर आप मुल्क से बाहर जाकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसमें 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, या तो आप एक ऐसे इस्टेब्लिश्ड फाइटर हो कि आप जहाँ भी जाएँ तो आपका एक नाम बन जाए, आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रेज्यूमे हो, या तो नंबर 2 ये है कि आप पैसा फेंको और ट्रेनिंग करने के लिए बाहर चले जाओ, और वहाँ पे आपको जो है ना या तो कोई साइन कर ले, या तो आप पे करते रहो और ट्रेन करते रहो। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेहतर लगता है, गो फॉर दैट वन। उसके अलावा मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे इंस्टाग्राम के, आस्क मी अ क्वेश्चन डाला था, उसके ऊपर किसी ने कहा था कि अपकमिंग UFC फाइट पास एज वेल एज रिफ्लेक्शन ऑन UFC events. Well, everybody talks about and does breakdowns of UFC, so I don't think I really need to do that. And yet again, I want to promote the Pakistani mixed martial arts scene, which is why I'm doing what I'm doing. So I'm gonna keep it and stick to Pakistani MMA scene. After that, I had someone ask me about core strength. Obviously, these are the exercises that I will talk about, but these I will talk about in detail. Somebody asked me about weight cuts. Somebody said, "Hi bro, please send me your WhatsApp number." Anyway, we had another question which said how to approach sponsors and how much money do you need for training abroad. सबसे पहला, how much money do you need for training abroad? Depends on the airfare, depends on where you're living, depends on the country that you're going to, depends on what your diet will be, depends on what team you will be training at,
So all of these things, when you keep these things in account, तब जाके आपको पता चलता है कि आपका बजट क्या होगा। अगर आप थाईलैंड आना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप फेटेक्स आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, ट्रेनिंग फ़ी चेक करें कि क्या है, उसके बाद आप फ़्लाइट टिकट्स चेक करें, वीज़ा फ़ी चेक करें। जब वो सब हो जाए उसके बाद फिर आप ये देखें कि आप रहने के यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं। आप सस्ते से सस्ते ऑप्शंस जो है ना ढेर सारे मिल जाती हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको जो है ना ये ऑप्शंस मिल जाती हैं। सो यू कैन डू योर होमवर्क अराउंड दैट and then see which suits you best. So talking about sponsors, I've actually made a video with Bashir Bhai. The link should be somewhere up here. You can go check that video out and then see for yourself that which system to approach the sponsor suits you best. Okay, I had a very interesting questions from, I would like to give them a mention. This is RTC MMA, which is run by Coach Zakir in Karachi. A big shout out, huge shout out to Zakir Bhai for doing amazing things for the Jiu-Jitsu community in Pakistan. Zakir Bhai, keep at it, keep hustling, big support and big shout out to you. Zakir Bhai ने पूछा था training methods and philosophy, weekly training routine, drills, sparring, cardio, techniques, etc. So all these things I will cover in a separate video basically, but लेकिन आपको मैं छोटी सी एक बात बताता चलूँ कि training method basically ये होता है कि आप एक टारगेट करते हो, आपका एक फोकस होता है कि यार हम लोग ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो आप एक बेसिक गोल सेट करते हो और आपकी जो हर एक चीज़ होती है, जो आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है, जो आपका रेजिमेंट होता है, फ्रॉम योर टेक्निक्स to your strength and conditioning, to your drills, to your sparring, every single thing needs to be catering towards that goal. Let's suppose if it's a competition and you set a goal for that competition, उसके लिहाज से जो है ना आप अपनी ट्रेनिंग schedule करें, and then you keep going about it every single time, every new goal, and then keep achieving those smaller goals ताकि आप साथ साथ grow भी करते जाएं और आप उन goals को भी achieve करते जाएं. Okay, I've run out of questions and I'm done here. I think that's about it. But once again, I would want to mention IFT and the great job that Baba Raja and SA Gardens are doing. These guys are keeping the Pakistani spirit high. These guys are keeping the Pakistani mixed martial arts scene alive and kicking. And let's not forget that these guys pay really well. These guys make sure that they take care of the fighters financially and they give them good fights. They give them solid fights which are good on their resume. And these are the kind of fights that you need to fight. And this will be good for your pocket as well. So with all that being said, if you guys have any other questions, any other recommendations for me, do mention it in the comments. And while you're at it, like, share, subscribe, all that good stuff. And keep supporting your boy so I can make more videos for you guys. Give out as much information as I can. And with all that being said, ladies and gentlemen, Kratos out.